अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर शाकिल ख़ान। और दोस्तों, इस वीडियो में हम कैटेगरीज डिलीट करेंगे। सबसे पहले इस लिंक को मैं थोड़ा सा स्टाइल अप करता हूँ। लेट्स गो टू कैटेगरीज डॉट जेएस और हमारे पास है बटन। मैं ऐड करता हूँ क्लास नेम btn स्पेस btn डैश डेंजर। सेव द फाइल। और दोस्तों, हमारे पास है टेलविंड CSS फोल्डर, but I want to rename this folder, and the reason is if I go to index.css। दोस्तों, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर टेलविंड CSS से मैंने एक्सेस किया है बेस। दोस्तों, ये टेलविंड CSS हमारे पास एक फोल्डर है इनसाइड नोड मॉड्यूल्स, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास है टेलविंड CSS, ठीक है। और ये फोल्डर मैंने क्रिएट किया है बेसिकली दिस वन। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पर ऐड करता हूँ रीनेम, लेट्स से स्टाइल्स, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ स्टाइल्स। Save the file, just see, fine. Now let's go to styles, buttons। और दोस्तों, मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे सिंपली btn dash danger @apply। we will have bg dash rows dash 500 py डैश। ऊपर हमारे पास कितना है? हमारे पास है 6 पिक्सल्स। 6 पिक्सल्स, या फाइन, एग्जैक्टली फाइन। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लेट्स गो टू बैकएंड। और सबसे पहले मैं बैकएंड API क्रिएट करता हूँ, ठीक है। क्लोज अप, लेट्स गो टू कंट्रोलर्स एंड कैटेगरी डॉट जेएस। दोस्तों, यहाँ पर एक मिस्टेक मैंने किया था, और वो ये था कि यहाँ पर देखना कैटेगरी एज ऑलरेडी एग्जिस्ट, और स्टेटस कोड मैंने ऐड किया था 401। 401 का मतलब है अनअथराइज। मैं जस्ट ऐड करता हूँ 400 विच मीन्स बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर भी मैं ऐड करता हूँ 400 एंड लेट मी चेक अप हेयर। यहाँ पर भी होगा 400, ठीक है। सेव द फाइल, लेट्स गो टू यूज़र कंट्रोलर एंड स्क्रॉल डाउन। ये होगा आई थिंक 400 एंड स्क्रॉल डाउन, ये होगा 400, ये भी होगा 400, ठीक है। एंड ये भी होगा 400। सेव द फाइल। now what I'm going to do, let's go to routes, category routes, and we will have router dot delete, slash and delete category हमारे पास होगा slash id। based on this id we will delete a category। फिर हमारे पास होगा authorization dot authorized, और फिर हमारे पास होगा एक फंक्शन इनसाइड ऑफ कंट्रोलर। मैं ऐड करता हूँ कैटेगरी कंट्रोलर, और हमारे पास होगा फंक्शन डिलीट कैटेगरी। लेट मी कॉपी दिस नेम, लेट्स गो टू category dot js, स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे होगा sync delete category request response। now I am going to destructure
id from request.params. So const destructure id equal to request.params, and after we will have try catch. So if we have catch, then console.log error dot response नहीं यार मैसेज। एंड वन थिंग मोर, फिर हमारे पास होगा रिटर्न res डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन। जेसन या मैं ओपन करता हूँ यूज़र कंट्रोलर, और मैंने जस्ट इस तरह से किया था। सो लेट मी कॉपी दिस थिंग एंड मैं करता हूँ पेस्ट यहाँ पे। ठीक है, सर्वर इंटरनल एरर। ठीक है दोस्तों, वेरी सिंपल। ना यहाँ पे हमारे पास होगा कांस्ट। बेसिकली वी डोंट नीड कांस्ट, हमारे पास होगा इवेट कैटेगरी मॉडल। यार क्या नेम है, कैटेगरी मॉडल या समथिंग एल्स? या कैटेगरी मॉडल। लेट मी कॉपी। अरे यार, कॉपी एंड मैं करता हूँ पेस्ट यहाँ पे। डॉट डिलीट 1। ठीक है, बेस्ड ऑन आईडी। अगर अंडरस्कोर आईडी इक्वल हो इस आईडी का, ठीक है, ठीक है, इसका, then return res dot status 200 dot json message, and by the way we will have category has deleted successfully. Save the file. Now let's go to routes, और इस राउट को मैं करता हूँ कॉपी, क्लोज अप एंड लेट्स गो टू स्टोर सर्विसेज कैटेगरी सर्विसेज, एंड इनसाइड ऑफ म्यूटेशन ये हमारे पास था पुट। सो बिलो अपडेट कैटेगरी, यहाँ पे मैं करता हूँ डिलीट कैटेगरी बिल्डर डॉट म्यूटेशन। हमारे पास होगा क्वेरी एक फंक्शन, और फंक्शन के अंदर हम एक्सेस करेंगे बेसिकली आईडी। सो यहाँ पे आईडी, फिर होगा रिटर्न, सो यूआरएल हमारे पास होगा दिस वन। लेट मी डिलीट द फर्स्ट स्लैश, एंड यहाँ पर हम करेंगे अपेंड आईडी इस तरह से। फिर होगा मेथड, सो डिलीट। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सपोर्ट दिस फंक्शन। लेट मी स्क्रॉल डाउन, हमारे पास होगा यूज डिलीट कैटेगरी म्यूटेशन। what's going on? Cannot redeclare block scoped variable. Sorry guys, not update, यहाँ पे होगा delete। ठीक है, now let me copy, let's go to screens dashboard categories.js, scroll up and यहाँ पर let me add comma this thing। ठीक है, and दोस्तों what I'm going to do, यहाँ पर होगा const array equal to,
और ये होगा फंक्शन। ठीक है। सो दोस्तों अगर मैं क्लिक करूँ, लेट मी स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ ऑन क्लिक। सो हमारे पास होगा इनलाइन एरो फंक्शन और इसके अंदर होगा एक डिलीट कैट और इसको मैं पास करता हूँ आईडी। सो हमारे पास होगा कैटेगरी डॉट अंडरस्कोर आईडी। अब ये फंक्शन मैं करता हूँ क्रिएट। सो यहाँ पे कांस्ट डिलीट कैट इक्वल टू आईडी एंड अब दोस्तों सबसे पहले मैं करूँगा कंफर्म के आया यू आर रियली वांट टू डिलीट द कैटेगरी। सो हमारे पास होगा इफ विंडो डॉट कंफर्म एंड आर यू रियली वांट टू डिलीट द कैटेगरी। सो इफ का मतलब है अगर हमारे पास हो ट्रू देन डिलीट द कैटेगरी। सो यहाँ पर हमारे पास होगा लेट्स से डेल डिलीट, यार क्या होगा रिमूव कैटेगरी और इसको मैं पास करता हूँ आईडी। अब दोस्तों इस फंक्शन का रेफरेंस हम पास करेंगे यहाँ पे। सो रिमूव कैटेगरी, लेट मी चेक द स्पेलिंग या फिर हमारे पास होगा सेकंड रिस्पॉन्स। लेट मी चेक कि आया रिस्पॉन्स हमारे पास है कि नहीं। ओके नो विच इज़ फाइन। ठीक है दोस्तों एंड यहाँ पर मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। ठीक है, लेट मी रिफ्रेश वन टाइम एंड अगर मैं करूँ इंस्पेक्ट कंसोल, अच्छा वी हैव यूज्ड क्लास का क्लास समवेयर, सो डोंट वरी। एंड मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक आर यू रियली वांट, स्पेलिंग गलत है 1 2, सो लेट मी वांट कैंसल रिफ्रेश अगेन, यहाँ पर क्लिक। सो लेट्स से यस। सो यहाँ पर देखना हमारे पास ये फुलफिल्ड, इसको मैं करता हूँ एक्सपेंड एंड वी हैव डेटा, इसके अंदर है मैसेज। सो दोस्तों व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यूज़ करता हूँ यूज़ इफेक्ट। सो यूज़ इफेक्ट and what we will have, basically what we will have a function और इसका होगा एक array dependency, इसके अंदर होगा response dot this thing data message। ठीक है, यहाँ पर हम चेक करेंगे if what we have, if we have a success as true, अगर ये हमारे पास true हो then do something। so if response question mark dot is, by the way here we don't need question mark, we just need to add dot is success, then do something। बाय द वे हम एक मैसेज भी डिस्प्ले करेंगे एंड फॉर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट वी नीड टू डू, उसके लिए सिंपली गो टू क्रिएट कैटेगरी
और दोस्तों I am going to we have to call set success function. So let me copy this thing. इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, डोंट वरी. पेस्ट करो और यहाँ पर मैं जस्ट ऐड करता हूँ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट message, which is fine. Now we have to import set success function और dispatch हमारे पास ऑलरेडी है. हमारे पास यहाँ पे होगा set success. Okay, just see. And another thing, let's go to service. अब दोस्तों, if we delete something, then I want to refetch categories again. So what I'm going to do, let me copy this thing below the query right here. Let me paste that thing and refresh karo one time. So let's say if I wanted to delete test cat 3, click here. Yeah, we have category has deleted successfully. Yeah, and if I want to delete test cat 2, yeah, and test cat 1 delete, fine. And cat 1, let's say cat 1, which is fine. ठीक है. So दोस्तों, मेरे ख्याल में ये बस ठीक है. So far, still if you have any issue in this video, you can ask the question. So for now, thank you so much, and I will see you in the next video. Allah Hafiz.